Hariom students and my dear friends, I know you people are just having phobia because right now board examinations are commencing soon, and today one exam was there of painting. So don't just worry, relax, have a sound sleep, and revise whatever your teachers have taught, and practice as much as possible. ओके कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, राइट। तो मेहनत करो, सफलता का हल जरूर मिलेगा। तो माय नेक्स्ट सीरीज इज फ्रॉम चैप्टर 1। मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपको पढ़ाए थे और उसमें हमने आपको सारी चीजें बताई थी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टू थिंग्स व्हिच वाज रिमेनिंग फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज redox reaction and rancidity as well as tooth decay, right? So let's start. Okay, so first I am going to take oxidation. What is oxidation? And the next is what is reduction. To my dear, I'm just creating a one short form, and that is a trick by which you can understand whether the oxidation is going on or reduction is going on by observing only. So oxidation formula is what? LEO, LEO, and reduction GER. What does it stands for? What does it stands for? LEO is loss of electron. Loss of electron, and GER is what? Gain of electron. So किसी भी reaction को, whenever you see any reaction, you must check the half reactions, right? In the half reaction you must notice what's going on, whether the electron is losing or electron is gaining. In such a way you can easily identify what is oxidation and what is reduction, right? So let me tell you the traditional definition of oxidation and reduction. So what is oxidation? Oxidation is, in a simple method, what we can say, addition of oxygen. If in any reaction the addition of oxygen atom takes place, okay, addition of oxygen atom takes place, or removal of hydrogen atom takes place, okay. तो किसी भी रिएक्शन को, whenever you are observing any reaction, just read the reaction very carefully. If somewhere oxygen is added as an atom, then that is oxidation, or if oxygen is not there, then focus on hydrogen. If hydrogen is removed, then you can say it is oxidation. Am I clear? Okay. Next is a reduction. What is reduction? Reduction is just opposite of oxidation, my dear. You have to just oppose the statement which I had written. So it will be addition of hydrogen or removal of oxygen. या तो हाइड्रोजन उसमें जुड़ेगा या फिर उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो ये तो कोर कॉन्सेप्ट हो गया रिडॉक्स रिएक्शन का। एंड व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन आप देख रहे हैं कि इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, यार ये दोनों चीज है क्या चीज है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन मींस द रिएक्शन विच in which reduction and oxidation goes simultaneously in a reaction, that is termed as redox reaction. And my dear, don't forget, all the reactions are redox reactions, whether the electrons are losing or electrons are gaining, right? Because you know what is the purpose? See my dear, what is the purpose of
any chemical reaction. Why does chemical reaction takes place? So the reaction takes place to satisfy themselves, right? To stabilize themselves. उनको अपने outer most cell को fulfill करना है at least by 8 electrons. That is why they tend to lose electron or gain electron. Am I clear? तो इसीलिए तो करते हैं ना यार. इंसान की जिंदगी में ये बताओ मेरे को, इंसान की जिंदगी में क्या चाहिए? उसको स्टेबिलिटी चाहिए ना. अगर हमें किसी भी जगह पे खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, पहनने के लिए क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को अच्छा स्कूल मिल रहा है, खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, घर अच्छा मिल रहा है, तो हम क्यों जाएंगे भाई बंबई? मेरा पॉइंट क्लियर है, राइट? ओके, सो लेट अस मूव ऑन. So after this I'm going to show you with few examples and what is oxidizing agent and what is reducing agent. We'll just study about that. Then few examples. Okay, so let me take a few examples and then I'm going to tell you about tooth decay and rancidity. Because see, MCQ type questions are coming out this time, so the better thing is that you require less time. लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस बार बोर्ड ने क्या किया हुआ है कि आपको बोर्ड पेपर भेजेगा स्कूल को डायरेक्टली, वहां से पेपर अपलोड करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी सेंटर जहां पे भी आपका जा रहा है, and at that time only within half an hour or 1 hour that copies are evaluated. तुरंत का तुरंत कॉपी चेक हो जाएगा और आपका मार्क्स अपलोड हो जाएगा. तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है यहाँ पे आपकी. You have to study well, my dear. Now you are having less time, right? So let me take up one example. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. Just I think before 5 minutes I had talked about half reactions. What is half reactions? This compound changes to this and this compound changes to this. Observe very clearly what is going on here. CuO changes to Cu. It means कि बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है. ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऑक्सीजन हैज रिमूव्ड. So it is what? It is reduction. Am I clear? यहाँ पे reduction हो रहा है as per your definition which I had told you. Next is H2 gets converted to H2O. Here addition of oxygen takes place. You can see clearly addition of oxygen takes place. Addition of O2. So it means कि addition of oxygen हो रहा है. So this is clearly oxidation, right? बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इसमें टिपिकल पॉइंट है जहां पे सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे. ओके, तो माय डियर इसका जस्ट आप समझ लीजिए, बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूं. जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मान के चलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या है? H2 है, राइट? यहां पे ऑक्सीडेशन मतलब सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे CuO होगा बिकॉज आई वाज फोकसिंग ऑन ऑक्सीडेशन. रिड्यूसिंग एजेंट इज CuO और ये ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन गेन कौन कर रहा है? हाइड्रोजन कर रहा है ना माय डियर. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज व्हाट? H2, राइट? तो इस तरीके से हम रिडॉक्स रिएक्शन को बहुत ही वंडरफुली सॉल्व कर सकते हैं. आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है. इफ एनी डाउट इज देयर कमेंट सेक्शन में बताना माय डियर. ओके, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट? ओके, so after that I am having little bit topic of rancidity and tooth decay.
So for that I am not going to have something in a blackboard. So just hear my words. What does rancidity means? You have often heard about rancid butter, rancid food. Okay, इसको थोड़ा और आसान करते हैं यार, बहुत सिंपल सा. हम लोगों को सभी को बिस्किट और नमकीन खाने का बड़ा शौक है, पोटैटो चिप्स खाने का बड़ा शौक है. सो वेन एवर यू परचेज द पोटैटो चिप्स, सपोज यू हैड tear out the packet and left it for a time, then what happens? Its texture and taste deteriorates, means changing are there. Like chips का क्रिस्पीनेस कम हो जाता है, मुलायम हो जाता है और उसका टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी ऑफ food, right? It actually occurs to the oily foods which are fried food, right? Namkeens, biscuits and chips and lot of other stuffs are there which get rancid, right? So when they get contact with moisture air, then they get oxidized, okay? And due to oxidation, their taste and texture deteriorates and this process is known as rancidity. Okay, इसे ही rancidity कहते हैं. Now my point is how to overcome rancidity. What are the steps to prevent rancidity? So the steps to prevent rancidity is that you have to store the namkeens and the chips and everything in an airtight container. That will be the better thing. Okay, and whenever you are going to eat, just open that time only. And whenever you have given the guest आए घर में, नाश्ता आपने लगाया, बिस्किट लगाया, सब कुछ लगाया. So after they after they have eaten and all, then you just take it and again put it in the packets or airtight containers so that their texture is maintained, right? So this one way is this. Again one question CBSE का बहुत traditional question आता है. वो आता है कि why the packets of potato chips flushed with nitrogen gas, right? This question often comes from CBSE. मैं लास्ट करीब 13-14 साल से तो देख ही रहा हूं कि ये क्वेश्चन आता रहता है. So why nitrogen gas is flushed, right? So आप ये जान लीजिए, nitrogen gas is non-reactive in nature. It avoids the contact of oxygen gas with that food item. That is why nitrogen gas is plus. आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट खूब बड़ा सा आता है 20 रुपए वाला, लेकिन उसमें चीज इतनी रहती है, राइट? नमकीन का पैकेट आता है, so things actually the stuffs are less but the gas is more. So this is why they are using. One more thing, for antioxidants you can use vitamin E. Vitamin E is also antioxidant. आपने टीवी पे एड्स देखे होंगे, बहुत सारे एड्स आते हैं कि हाँ भाई आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, आप 40 के पार आपकी स्किन ग्लो नहीं करती है, देन व्हाट हैपन, आप ओले लीजिए, बीबी प्लस लीजिए, ये सब लीजिए, अलग अलग कॉस्मेटिक्स बताते हैं. दिस आर हैविंग एंटीऑक्सीडेंट्स. सो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? ऑक्सीडेशंस को रोकने का, राइट? सो एंटीऑक्सीडेंट्स की जगह पे प्लीज ईट 1 एप्पल अ डे एंड कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट? Okay, now coming back to your tooth decay, दांतों का खराब होना. How does it happen? See my dear, in the childhood times, your ma'am or your sir in the primary sections when your other teachers are there, so they had already suggested you to brush the teeth twice a day. 2 टाइम ब्रश करना चाहिए. So whenever you are eating anything sweet, मीठा कुछ भी खाते हैं, और any sticky thing which sticks to your teeth, then at that time kindly just rinse your mouth. Okay, lot of mouth rinsers are available in the market. You can purchase that. Colgate rinsers are there. I'm not adding for them, yeah, they are not giving any money. Okay, they don't give me any money, so I'm just saying you for the protection of your teeth. सो टूथ डिके क्यों होता है? बिकॉज जब हम खाना खाते हैं बेटा, तो हमारे दांतों के बीच में जो गैप होते हैं वहां पे फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, राइट? एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, ओवर द नाइट द बैक्टीरियाज डेवलप, राइट? एंड दे मेक द मीडियम ऑफ योर टीथ एसिडिक, राइट?
and due to that medium only, and as you all know that teeth are made up of calcium carbonate, so they deteriorates the nature of your teeth or told material, chemical materials of the teeth, and thus you get tooth decay or cavities. I hope all of you have understand the chapter 1. So here I am ending this series of chemical reactions and equations, and tomorrow I will post the video of acid, bases and salt from very basic, right? So it's my request to you all, kindly spread it to maximum people so that the underprivileged children also get the knowledge and get the things to be clear, because they all are searching for the coachings, tuitions and all. So I'm helping you out. Thank you so much for the watching, and thank you for your patience. Myself Ashish Kaushal. Just subscribe the channel Learning Science by Ashish Shah. Subscribe